हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिविंगस्टन रिसर्च ऐसे राइटिंग वेबसाइट के टेस्ट एमसीक्यूज एक ही जगह पे कंपाइल करके दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही था बार बार क्वेश्चन कि जब भी वो टेस्ट देते हैं उन्हें डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं और जिसकी वजह से टेस्ट पास नहीं हो पाता। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जब आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाती है। इसमें चूंकि आपको टेस्ट पास करने के लिए एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, तो आपको 24 में से 21 एमसीक्यूज में पास होना होता है। ओके, तो जिसकी वजह से आप टेस्ट फेल कर जाते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं होती। अब मैंने कोशिश की है, मैंने आपको काफ़ी सारा डाटा एक ही जगह पे कंपाइल करके एक ही फाइल में आपको इस पे मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको 100% करेक्ट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आने वाली वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा मजीद डाटा भी कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करूं। आप कोशिश करें, पहले अच्छे से टेस्ट की तैयारी करें, फिर टेस्ट के लिए जाएं। ओके, आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपका टेस्ट आप इस पे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो कोशिश करें इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, इन क्वेश्चंस को एक जगह पे नोट डाउन कर लें। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस बार बार यानी रिपीट हो रहे होते हैं और कुछ जब आप हर दफ़ा साइन अप करते हो तो आपको डिफरेंट या न्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश करें सारे के सारे टेस्ट एमसीक्यूज को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप जब भी अटेम्प्ट लोगे तो आप 100% गारंटी के साथ ये टेस्ट पास कर लोगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करना पड़ेगी। ओके, तो चलते हैं टेस्ट एमसीक्यूज की तरफ। याद रखिए कि हर जो क्वेश्चन होगा उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो जो मैंने हाईलाइट किया होता है या तो ग्रीन से या ब्लू से वो करेक्ट आंसर होगा। आप उसको प्रॉपरली अच्छी तरह तैयारी कर लें, ठीक है, या नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। द प्लेन वाज क्लाइंबिंग अप थ्रू द स्काई, इसमें आपने क्या यूज करना, आर्टिकल आएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है एवरीबॉडी न्यू दैट ही वाज लेस reliable than his sister, इसमें क्या आएगा, reliable than, this one is the most appropriate choice. Okay, let's move to the next one. If I had known you were coming I would have prepared a dinner, इसमें क्या आएगा, would have, उसके बाद past participle आएगा। ये थर्ड कंडीशनल है, आपको पता है, इसमें had के बाद past participle और कंडीशनल क्लॉज में, और इसमें दूसरे हिस्से में वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। दैट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्यू टू कोल्ड वेदर नो वन वाज स्विमिंग इन द सी, इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा ड्यू टू। ओके, अच्छे से देख ले। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट इमेजिन हिम मूविंग टू अनदर सिटी, आई कैन नॉट इमेजिन हिम, इसके बाद क्या आएगा, जेरंड आएगा मूविंग। अच्छे से आप इसको देख लें। टू बी मूव भी नहीं आएगा और मूव भी नहीं आएगा, ये मूविंग आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यू शुड हैव सेंट दीज डॉक्यूमेंट्स यस्टरडे व्हाई आर दे स्टिल हियर, यहाँ पे क्या आएगा, शुड, ऑप्शन डी आएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। बाइसिकल्स शुड इन द सिटी इंस्टेड ऑफ कार्स, शुड बी यूज्ड, क्या आएगा यहाँ पे, शुड के बाद बी यूज्ड आएगा, ऑप्शन बी आएगा। बाइसिकल्स शुड बी यूज्ड in the city instead of cars. Okay, let's move to the next one. This research was carried out by a group of renowned scientists. Carried out, इसमें क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए आएगा ये। Okay, let's move to next one. I'm sorry but I'm not at liberty to discuss your problems today, कौन सी preposition आएगी, at, this one is the best choice here. Okay, let's move to next one. If you leave now you will arrive on time, he said, इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या आएगा, he said if you leave, if they left, क्या आएगा, left, यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट, नाउ का क्या आ जाएगा, देन बन जाएगा, ऑप्शन बी आएगा। ये रिपोर्टेड स्पीच पे आप इसको ये चेंज कर लोगे, ऑप्शन बी आएगा, है लेफ्ट देन, नाउ को किस पे कन्वर्ट करेंगे, देन में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
Usually I prefer an aisle seat to a window seat. Aisle, option B is the most suitable choice here. Okay, let's move to next one. When the ambulance arrived, the student was still conscious. इसमें option B आएगा. Okay, let's move to the next one. The situation is getting worse. We need a plan. Is getting worse. इसमें option A आएगा. That's very easy. Let's move to next one. I usually use a pencil to highlight the most important information that I'd like to remember. इसमें highlight आएगा. I usually use a pencil to highlight. Option A is the most appropriate choice. Let's move to the next question. The man seemed stationary. Spelling check कर ले. Stationary, option D is the most suitable choice here. The man seemed stationary because he was so far from us. Okay. Let's move to the next question. I'm going to have my hair dyed this afternoon. Option C is the most suitable choice. Okay. Let's move to the next sentence. The meeting took up the whole evening. इसमें ऑप्शन डी आएगा जी. कौन सा आएगा? ऑप्शन डी. याद रहे आपने एक भी मिस्टेक नहीं करनी, तब जाके आपका टेस्ट क्लियर होगा. उसके लिए आपको प्रॉपर इसकी प्रेपरेशन करना पड़ेगी. तो आप इन तमाम MCQs को नोट डाउन कर लेना. मैं फिर कोशिश करूंगा जो अगर कोई डाटा रह गया उसको भी मैं कंपाइल करके एक ही फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो फिर आप हर तरह से अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे. Politics is a set of activities performed in every country. Politics इसमें सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए आपने इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा. इन अ सिंगुलर सेंस इज आएगा. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट टुक मी years of practice to learn to play the piano. प्रैक्टिस, ये इसमें नाउन आएगा. यहाँ पे प्रैक्टिस, ऑप्शन बी would be the most appropriate choice. Let's move to next question. The mother French for something something French for 3 years when she was a kid. Okay, इसमें क्या आएगा? The mother studied. Simple past आएगा. The mother studied. Option D would be the most suitable choice here. Let's move to next question. You are annoying. You shouldn't ask so many questions. इसमें ऑप्शन बी आएगा. You shouldn't. इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस. इफ इट वर नॉट फॉर द चाइल्ड दिस कपल वुड ब्रेक अप. इसमें क्या कहा? वर नॉट फॉर द चाइल्ड. ऑप्शन डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस. ओके, इसको अच्छे से देख लें. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This tall boy reminds me of my brother. This tall boy reminds, इसमें ऑप्शन बी आएगा जी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We were watching a film when suddenly the lights in the house went out. Option C is the most suitable choice. Let's move to the next question. I'd like to order a cup of large coffee to go, please. इसमें क्या आएगा? I would like to order a. Article A आएगा. Okay, let's move to the next question. Her house is twice as big as mine. इसमें ऑप्शन B suitable choice है जी. Okay, let's move to the next question. If I had time, I could join you for a walk. इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी. दैट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस. कम टू नेक्स्ट सेंटेंस. माइक दे ऑल वर वेयरिंग ब्लैक सूट्स. माइक दे ऑल वेयरिंग ब्लैक सूट्स. ऑल्दो एक्सेप्ट फॉर माइक. यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट फॉर. स्टार्ट पे आना, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगी, यहाँ पे इसको मिस हो गया. यहाँ पे आपने क्या लिखना है? एक्सेप्ट फॉर माइक. यहाँ पे आपने इसको
except for लिखना है. Okay, option B is the suitable choice. Let's move to next sentence. Having children will change my life. इसमें participle आएगा, present participle. Having children will change my life. Come to next sentence. According to GPS, this must be our stop. This must be our stop. कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे आएगा? Must. Okay, option B is the best choice here. Let's move to the next sentence. His uncle has been taken to the hospital, so he is not at home. Has been taken. This one is the most suitable answer. Okay, let's move to the next question. We both were dreaming of setting up our own business after graduation from the university. Option B is the most suitable choice here. Okay, इसको एक दफा फिर देख लें, क्या आएगा? Setting up. Let's move to the next question. This film is a reminder that we need to live our life to the fullest. इस पे क्या आएगा? Option D. That's quite easy. अच्छे से देख लें. Let's move to the next sentence. I will call you if I have a minute, she said. इस पे जो reported speech क्या बनेगा? She said she would call him if she had a minute. इसमें इस will को इस पे past में change करेंगे, would call, और यहाँ पे second में क्या आ जाएगा? Had. So option D is the most appropriate choice for this sentence. Let's move to the next one. She had a vacation and could feel its effects long after. Its effects, इस पे preposition its आएगी, sorry, pronoun its आएगा, और यहाँ पे noun आएगा effect. So move to the next one. I can't find the eye of the needle. I can't find the eye of the needle. Could you please help me? इस पे क्या आएगा? Option B आएगा. That's quite easy. Okay, let's move to the next sentence. Being a back-end developer involves regular additional studying. Being a back-end developer. इसको क्या? Back-end developer. इसके बाद क्या आएगा? Involves. Option A आएगा जी. Regular additional studying. Let's move to the next question. The pencil is blunt. It needs sharpening. Option C would be the most suitable choice for this sentence. Okay. Let's move to the next one. Money is kept in a safe. इसमें option B आएगा जी. Okay. So let's move to the next sentence. We ought to visit our granny when we are in Italy. So option A is the best choice for this sentence. Let's move to the next sentence. If it were not for the child, this couple would break up. ये पीछे भी आ चुका है, इसको दोबारा देख लें. If it were not for the child, this couple would break up. तो इस पे ऑप्शन डी आएगा जी. Okay. Let's move to the next sentence. Editor-in-chief's decisions are crucial in terms of policies and publishing process. इस पे ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इसको अच्छे से देख लें. Editor-in-chief's decision, apostrophe कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा. Editor-in-chief's decisions are crucial in terms of policies. Okay, let's move to the next question. Did you like the lecture? It was a complete waste of time. At least the coffee was great. क्या आएगा? At least. इसको अच्छे से चेक कर लें. तो इसमें बच्चे यहाँ पे मिस्टेक भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन में अक्सर. वो जब आप उसको चेक करोगे उससे किसी भी AI टूल से, तो आमतौर पे उसमें क्वाइट द अपोजिट समटाइम वो फर्दर बोर लगा देता है. तो इसमें जब आप एट लीस्ट लगाओगे तभी जाके ये आपका सेंटेंस ठीक कंसिडर होगा इस वेबसाइट पे. इसलिए आप अच्छे से इसको देख लें. We need to be at the train station in an hour.
दैट्स क्वाइट इजी, इसमें ऑप्शन बी आएगा। फर्स्ट पे आर्टिकल क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, और दूसरे में इनडेफिनेट आर्टिकल एन आएगा। वी नीड टू बी एट द ट्रेन स्टेशन इन एन आवर। आई कैन नॉट फाइंड माई चार्जर, आई एम अफ्रेड आई माइट हैव फॉरगॉटन इट इन द कार। माइट हैव फॉरगॉटन, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, लेट्स मूव टू the next sentence. The teacher forbids the students to use mobile phones in the classroom. The teacher forbids the students to use. इसमें infinitive आ जाएगा, option C आएगा. That's quite easy. Let's move to next sentence. This tall boy reminds me of my brother. Option B is the best choice here. The book is by far best what I have read in months. इसमें ऑप्शन ए आएगा, ये प्रेपोजिशन आएगी बाय। चेक कर ले आप अच्छे से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ फिल्म टू वॉच व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। वॉज सर्चिंग, इसमें क्या आएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाएगी यहाँ पे। दैट्स वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द सनलाइट shining on the screen of my laptop is really affecting my concentration. इसमें affecting, इसमें ऑप्शन सी आएगा। I suggest you going to a different cafe tonight for a change. कौन सी preposition आएगी इसमें, for. So option C is the best choice. Let's move to next sentence. If I were you, I would call him. He told me. What would be the reported speech? He advised me to call him. He advised me to call him. That's quite easy. You might have told me that my purse was open. Option B is the most appropriate choice for this sentence. Okay, might have told. Let's move to the next one. I will get the tickets to the cinema unless you are busy this evening. Are busy इसमें आएगा, बहुत easy है ये, ऑप्शन बी आ जाएगा ये। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल यू हार्डली नो। स्टॉप कंप्लेनिंग, दैट वुड बी द मोस्ट appropriate choice. Option is the best choice here for this sentence. Let's move to the next one. Would you mind if I sit beside you? Beside. Okay, इसमें कौन सी preposition आएगी, beside. The stadium was slowly being filled by the fans. Being filled. Okay, let's move to the next one. You are so tactful when dealing with the people. I have never had such diplomatic friends. इसमें ऑप्शन बी आएगा, diplomatic. Is that clear? Okay, just have a look once again. Option B is the most appropriate choice for this sentence. Let's move to the next one. By the end of the year, I will have been working for this company for 2 years. Option C is the best choice for this sentence. Okay, will have been working. The forger was trying to convince the court of the validity of the document. इसमें कौन सी preposition आएगी, of. ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा जी। ओके, let's move to the next sentence. His uncle has been taken to the hospital, so he is not at home. That's quite easy. Let's move to the next one. I appreciate you giving me a gift. I appreciate you giving me a gift. That one is very very important. Okay, some of the students commit mistakes here. They I appreciate you to give लिख देते हैं, इसमें क्या आएगा, giving. अच्छे से याद रख ले इसमें। I wish I studied more. However, I still did well on the test. इसमें conjunctive article, conjunctive adverb क्या आएगा, however. Okay, इसमें however इस्तेमाल होगा, इसको अच्छे से नोट कर लें।
Let's move to the next one. If the water is boiling, it's time to add the rest of the ingredients. Is boiling. अच्छे से इसको भी चेक करें तो इस पे मिस्टेक नहीं करनी, बॉयल्स नहीं लगाना। ओके, आप चेक करोगे तो एन मुमकिन है आपको चैट जीपीटी बॉयल्स का ऑप्शन दे। ओके, इसको बार बार हमने क्रॉस चेक किया है, तो आपने इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपने कम से कम 21 करेक्ट आंसर्स देना होते हैं आउट ऑफ 24। इसमें क्या है, इज बॉइलिंग। आप 100% अपना दोगे तो तभी जाके टेस्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। डिड यू लाइक द लेक्चर? इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, एट लीस्ट द कॉफी वॉज ग्रेट। इस पे एट लीस्ट इट्स बिन ऑलरेडी मेंशन्ड आई थिंक, तो इसको छोड़े, नेक्स्ट चले। यू आर अनोइंग, यू शुडंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, ये भी पहले आ चुका है। She might have left him to do all the work on his own, so I decided to help. Might have left. Yeah, I guess my option D, okay? Let's move to the next sentence. Keeping a healthy way of life has, not surprisingly, become a popular trend. Surprisingly, इसमें क्या आएगा? Option B. That would be the accurate choice here. Come to next sentence. Nevertheless, I don't think you need to break up. इसमें क्या है, nevertheless. Option C. Okay. Let's move to the next sentence. Supposing you won in a lottery, what would you spend the money at? Would you spend? Option B is the most suitable choice. Okay. His behavior was a disgrace to everyone at the party. इसमें क्या है, disgrace. अच्छे से देख लें. Okay, now come to the next one. Are you planning on your vacation next year? इसमें option B आएगा. Now come to the next sentence. The agreement was signed by both parties yesterday. First one would be the most accurate choice here, was signed. Option A इस पे ठीक है जी. Okay. Let's move to the next one. The teacher asked the students to elaborate on the topic. इस पे क्या है, elaborate. Elaborate. Okay. Now come to the next sentence. The teacher gave a clear instruction of the assignment. Instruction. This one is the most appropriate choice. Let's move to the next sentence. The loud noise from the construction site made it hard to concentrate. Loud noise. इस पे option C आएगा जी. Let's move to the next sentence. We have lived here since 2003. Have lived, okay? इस पे ये आ जाएगा option C. He debated his opponent with a strong argument. Debated. इसकी spelling check कर लें. Option C would be the most suitable choice. Let's move to the next sentence. Which sentence is a compound sentence? यहाँ पे 4 options दिए गए हैं. इस पे आपने देखना कौन सा compound sentence है. बहुत easy है. The cat slept on the chair, but the dog stayed on the floor. This one is a compound sentence. Okay. Let's move to the next sentence. The report was both detailed and comprehensive. Comprehensive. That's quite important. Okay. इस पे option D आएगा. I didn't like the food, he said. What would be the reported speech of this sentence? He said he didn't like the food. Didn't. Okay. I didn't like. Didn't will be changed into had not. Okay. Mistakenly इसको ये mark कर दिया. इस पे option B आएगा, had not liked. इसको अच्छे से check कर ले. Didn't को किस में आप convert करोगे? Had not liked में. Okay. This one is the best choice, option B. ये वाला ठीक नहीं, ये mistakenly mark हो गया है. इसमें आप option B ही correct consider करोगे. अच्छे से देख लें, दोबारा सुन लें. इसमें क्या आएगा? Option B. This one would be the best choice here. Okay. ये गलती से mark हो गया है. इसको आपने कहा had not liked. Let's move to the next sentence. This is the author
Who wrote the mystery novel we read? read की सेकंड फॉर्म क्या होगी? read. इसमें आपने क्या लगाओगे? इसमें आप who यूज करोगे. कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो? who. बहुत इजी है, जिसमें ऑप्शन ए आएगा. Okay, now come to the next sentence. He was accused of stealing confidential documents. Preposition क्या आएगी? ऑप्शन बी आएगा इसमें. Okay, now come to the next sentence. She was able to bring up important issues during the meeting. इसमें ऑप्शन सी आएगा जी. Okay. Now let's move to the next sentence. The new policy was introduced during the assembly. Was introduced. This one is the most appropriate choice. Okay, let's move to the next one. Drivers must park in designated areas only. कौन सा मॉडल आएगा इसमें? वर्ब must. Okay, that's quite easy. Let's move to the next sentence. She suggested going out for dinner. इसमें ऑप्शन बी आएगा, going. To beat around the bush means to avoid talking directly. Okay, that one is the most suitable choice. Avoid talking directly. Okay, let's move to the next sentence. In a formal business letter, it is appropriate to use esteemed. क्या है? esteemed. ये यूज करते हैं आमतौर पे. आप इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं लिखते. ड्यूड, बडी, थैल. उसमें फॉर्मल बिजनेस लेटर्स में आपने क्या यूज करना? esteemed. Okay, that's quite easy to understand. Let's move to the next sentence. He studied very hard for the exam. Consequently, he passed with flying colors. Consequently. First one, option A, is the best choice here. Okay. Let's move to the next sentence. If she had known the truth, she would not be in this dilemma now. Had known. क्या आएगा? इसमें ऑप्शन बी आएगा जी. Okay. Of all the students, he arrives the most cautiously. The most. This one is the most appropriate choice. Okay. Just have a look once again. Option C इसमें आएगा जी. Come to the next sentence. The new policy has serious implications for all employees. Option A is the most suitable choice. Serious. Okay. Is that clear? Now come to the next sentence. She felt a deep sense of grief after the loss of her pet. Grief. This one would be the most appropriate choice for this sentence. Okay. Grief. Let's move to the next sentence. She followed the instructions perfectly. That's quite easy. ऑप्शन ए आएगा इसमें. आप इसकी स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लीजिएगा. Now move to the next sentence. Identify the sentence with correct pronoun antecedent agreement. Option C is the most appropriate choice. The team won its first game of the season. Now move to the next one. He was steadfast in his belief that he could succeed. Steadfast. Last one is the most suitable choice. Okay. Now move to the next sentence. They went to the park. She said, what would be the reported speech of this sentence? She said that they had gone to the park. Had gone आ जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन ठीक है जी. Let's move to the next sentence. She was very strict with her students when it came to the deadlines. Strict के बाद क्या आएगा? With. This one would be the most appropriate choice. Let's move to the next sentence. The protesters were dispersed when the police moved in. क्या आएगा? Moved in. ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है जी. Okay. Let's move to the next sentence. Tourists should carry their passports in public places. Should carry their passports. This one is the most appropriate model to be used right here in this sentence. It's difficult to focus when you are not interested.
ऑप्शन बी इसमें ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। टू जंप ऑन द bandwagon means to join a popular activity or trend. This one is the most appropriate choice. ऑप्शन ए इस पे ठीक है जी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई मिस द बस consequently I was late for work. इसमें क्या दिया? Consequently. This one must can be used for a conjunctive adverb. Okay, consequently would be the best choice. She has an understanding of complex mathematical concepts. Concepts पे article आएगा an. That's quite easy to understand. Okay, तो ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs थे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है उसके बाद, तो उसमें आप जो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ को सिलेक्ट करते हो तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर उस बच्चे ने सिलेक्ट किया था। अगर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर को सिलेक्ट करेंगे तो उनके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। यही क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी या आपके अकॉर्डिंग जो भी आप एज ए मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए डिफरेंट होगा। ओके, सब्जेक्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश MCQs वो सेम होंगे ऊपर वाले, वो अच्छे से तैयार करें आप। तो कुछ मैं आने वाली वीडियोस में एक दो में पूरा रिमेनिंग डाटा कंपाइल कर दूंगा, फिर आपको किसी किस्म की कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़ेगी। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट में पहला जो क्वेश्चन है, फेमस फेमिनिस्ट ऐसे mad woman in the attic refers to a minor character from which great British novel? तो इसमें आपने ऑप्शन डी है जेनी आयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट अ नाइस आइडिया टू लीव द किड्स बिहाइंड विथ माय मदर एंड स्पेंड द वीकेंड टुगेदर। इसमें ऑप्शन सी आएगा जी। थर्ड क्वेश्चन में है, जैक एंड जूडिथ इनवाइटेड अस टू देयर हाउस वार्मिंग पार्टी। उसका मतलब क्या है? इसका हाउस वार्मिंग पार्टी का वेलकमिंग पार्टी। ओके, इस पे ऑप्शन ए बेहतरीन चॉइस है जी। नंबर 4 क्वेश्चन है जी इस पे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक यूजुअली, ऑलवेज और समटाइम्स आर यूज्ड विथ व्हिच टेंस? एवरीबॉडी नोज such type of adverb of frequency are commonly used with simple present or present indefinite. So option B would be the best choice for this question. Okay, let's move to next one. Who of the following famous Americans has not received a Nobel Peace Prize? Maya Angelou, इस पे सी आएगा, सी ऑप्शन। Come to next question. The exam is in 3 days, so you should wrap your head around this project. इसका मतलब क्या है? Stay focused. Wrap your heads around this project mean stay focused on. Now come to next one. Where did you go last summer? That's quite easy. Simple past में interrogative में क्या आएगा? Did use करेंगे और उसके बाद form first use होगी। So option C इस पे बेहतरीन choice है। Okay, let's move to next question. Choose the option with both words spelled correctly. Her address is just across the road. ऑप्शन बी आएगा। इसमें बहुत इजी है ये, अच्छे से इसको चेक कर लें। Now move to question number 9. In a sentence, I will always remember the day when I met you. The part in bold is known as the non-defining relative clause. ऑप्शन बी आएगा जी। ओके ओके, let's move to question number 10. My best friend is German. He comes from Berlin. इसमें ऑप्शन ए आएगा। Let's move to the next one. Choose the right preposition. At first they were interested in him, but they changed their mind later on and chose a more famous actor instead. इसमें क्या आएगा? Instead. This one would be the most appropriate choice. Let's move to the next question. Sally is a bookworm. Bookworm इसमें क्या आएगा? Loves to read. इसका मतलब क्या है? She loves to read. Okay.
Now move to the next question. He bumped into Jessica at the corridor. Bumped into. Okay, that's very easy. Now move to the next question. In which tense is the phrase in bold? I have been watching television for hours. Have been watching. ये एक बच्चे को भी पता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो ऑप्शन सी इस पे ठीक है जी. ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट वन. इन विच ईयर वाज द ग्रेट फायर ऑफ लंदन? ये वाक्य कब पेश आया था? 1666. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है. 1666 पे. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. इसको कोशिश करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. अगेन मैं बता दूं आपको, लिविंगस्टन पे क्वालिफाई करने के लिए आपको 24 में से आपको एटलीस्ट 21 करेक्ट आंसर्स देना होते हैं. कोशिश करें जो प्रोवाइडेड मैंने MCQs आपको यानी जो दिए हैं अभी प्रोवाइड किए हैं, इसको पहले अच्छे से तैयारी कर लें. इसके बाद टेस्ट के लिए आप अटेम्प्ट लें. ओके, तो मैं आने वाली वीडियो में भी कोशिश करूंगा मजीद जो डाटा एक ही जगह पे कंपाइल करके जो कुछ MCQs रह गए होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे. आप कोशिश करें, फिर उसके बाद आप ट्राई करें, आप यकीनन अपना इस पर टेस्ट पास कर पाओगे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट.